Good evening, everyone. How are you feeling tonight? Can't hear you, yaar. Come on, pump up the volume. Still can't hear you, man. I think this auditorium is too big, right? Yeah. Better than before. Yeah, that's right. So, everyone, welcome everyone. This is Abhijit. And this is Vaishali. And we are the two alumni who got lucky enough to be picked up as hosts for you this evening. That's right. And just like how back in the college days, right? We're just about as prepared for this as for our data structures test. That's true. And then ChatGPT came to us rescue, and then we prepared our script using that. I hope there is no Rancho over here who would have swapped our lines here and there. Okay, but enough about our troubles. We'll let the people who have prepared and put all their sweat and effort to run this show. We've got an incredible set of lineup today for you this evening. Let's just sit back, relax and enjoy this show. And to kick off the event, we have Hemachandra. He will be giving the opening speech, and he is the president of Alumni Council. So please join us in welcoming him onto the stage. Thank you, everyone. People still coming in. Okay, thanks for all people who have already come in. Today we have the privilege of having Professor Das, Professor Sadagopan, Chandra ma'am, and all the faculty with us. And then, of course, all the alumni who have taken time over the weekend to join us from all parts of Bangalore. This is indeed a special day. As most of you would have realized, we've not met in person for the last 2 years plus. So this is indeed, I'm hoping that we see more alumni coming as we progress because of the famous Bangalore traffic. I know there may be some delays. Not only that, this is the first time that we are having Sangam in this wonderful auditorium. Amazing acoustics. Feels different to be on stage with this. We are used to the open air auditorium where people could half hear me and I could pass off with anything. But here it is very so clear that I have to be very careful on that. Little nervous. So, warm welcome, guys. Thank you, professors, for taking time on the weekend. I know you had a busy early morning day too today. So, I'll keep it to the minimum. We have a long list of programs lined up. Let them start, and then I will come back again towards the end of the program to talk more about the alumni activities and how we get connected, and then we can keep it going forward. Thanks once again for all of you for joining. Thank you, professors, and I'll request you take it forward. Thank you, Hemachandra, for the warm welcome. Ladies and gentlemen, today we have a special surprise for you. We have a talented young dancer who will be performing for us. Please give a warm welcome to this 5-year-old Sanvi Kaushik, who is the daughter of our 2012 alumni Gaurav Kaushik. Please give a round of applause. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि
गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Wow, that was an amazing performance by Sanvi. Give her a big round of applause again, everyone. I definitely couldn't have done when I was 5. Even I couldn't do that. I probably was just learning how to tie my shoelaces at that time. Yeah. By the way, do you know do you remember the OSI model? Yeah, I read that long time ago. So, who's the first person that comes to your mind when you think about the OSI model? Obviously, Das sir. I remember sitting through his lectures in Ramanujan block. That's absolutely right. And now we have the privilege of calling him up on the stage. And he's the mastermind behind all the incredible things that are happening in the college right now. Our very own director, Debabrata Das, the network layer of IIIT Bangalore. Thank you, both of you, for your kind introduction. So I have to remember all these things, and so nice of you all. And let me, first of all, big thanks to Hemchandra and Amol and the alumni committee and all the alumni who has been here and they'll be also coming in for hosting this day, such a memorable day. And also I wanted to, before I go into my talk, so I wanted to also thank our staff, particularly Roshni and Manoj, and also the Registrar's office and CEO's office for all those activities to bring it to this kind of grand event. So with this note, as you know, this IIIT Bangalore Sangam word is a very apt word for this event, where is the Sangam, where we use this of the rivers coming together. So this river of every batch and present students, faculty, staff, and all the well-wishers, parents, all of them together, this Sangam is one of the only and unique event which happens in IIIT Bangalore,
And we will continue this event every year because last 2 years of the COVID kept us little away. But now we are back with full energy and action on this place. So before I go to the next slide, and I wanted to start with this one, that we are only 25 years young, very young, energetic, and so nice. And if you look at these 25 years, the contributions are huge for every one of you. That's enormous, huge. So if I look at this contribution, A stands for the first ABCD. If you go through, first A stands for alumni. Alumni is our lifeline, which is in the industry and doing such a good work and so much of good technically, and also their attitude. So every time, whenever the company people comes to our campus for recruitment and placements and all kind of things, they always praised you. And that shows that your contribution still continues, and it will continue. Of course, you will do well. Our best wishes are there. So A stands for alumni. B, if I say board members, our board, such a supporting. My farmer and me also always say that without them running this kind of institution, it would have been very difficult. And C stands for a chairman of the board, the former chairman, like all those members and the present chairman all are so supportive. And they have done so much of good support to the IIIT Bangalore. And today if we are here, all the board members, chairmen all have a great contributions. D stands for our directors. The former director is here. And big hand of applause to him. His birthday is here today. So with all those things, his contributions over the years, over the decades. So that has been there. And E stands for our employees, the staff. You can't imagine, without them, we would not have able to do any single day of class. From morning 6:30 a.m., our staffs are here. 6:30, 7 a.m. they're here. And our staffs, that former registrars, present registrar, CAOs, CFOs, admin, scientific staffs, and every one of them has supported. And all of us is reached to these 25 years of Silver Jubilee for their contribution to us. And these employees has been doing us very proud because they silently work behind the scene, even the today's event. So many contributions of them. From morning 4 a.m. they are here because we had a marathon today, and so it was to be start. So 4:30 a.m. they started coming in and make us ready to run by 6 a.m. And the F stands for the faculty. The faculty of the IIIT Bangalore, you know them well, so they have contributed. And they have stand with all the students' activities, starting from the teaching, research, labs development, and all kind of things. And I can go on, but let me stop at G. G, you will be really know that, the answer of me, but the thing is, this is an invisible great strength to us. G stands for the God. Without the God and Almighty, we would not have been here. Look at the COVID, how it went off. The God is so kind to us that we not only being here, but also we could able to do our academics, research, everything, all activities with the blessings and all. So let me stop at G because once the God come in, next I can go up to Z where the Zoom was there to help us for the academics or the classes and all. So this Silver Jubilee year, we want to do a lot of other activities, so which will come and we'll talk to you. And before I go into the other kind of things, let me first acknowledge your huge contribution over the last 2 years. So this is the thing which happened during the COVID, and our alumni, staff, faculty, all of them, students, has generously contributed either in cash, kind, time, everything. And these contributions saved many lives, particularly laborers who came from across the country and got stranded in Electronic City, couldn't travel, and we went on giving the food and all kind of helps. And today's morning, this one is this run for this Miles for Meals. You have given the caption. So the money we collected from everyone will be donated to the government school for the day meal in Electronic City through the LCTA.
and so many staff, you can see all of them are here, faculty member who ran, students. Many alumni came in the morning also, they ran along with us for this great cause. So now this mentorship, you can look at, these are the contribution alumni is doing continuously over the decades, and still it is continuing, like mock interviews, further education guidance, CV reviews, tech talks, and recruitment. And I know the Hemchandra will be talking more about at the end, but we have done some more at the end part. I'll also talk to about this. So this is still continuing. We're thankful to you. And alumni activities in the year 2021, Alumni Council started several initiatives to educate students with their collective experience, knowledge, and wisdoms. And IIIT Alumni Connect, a monthly event where the members of the IIIT Bangalore alumni community can engage and learn and share various topics together. This is also they are continuing doing. And fireside chat interactions between the professors and alumni, which is going on. And the IIIT Alumni Mentorship Series, Higher Studies Education, is a monthly event where the members of the IIIT Bangalore alumni community mentor students for the future PhD, MS applications. That is also going on. And IIITB Digital Society Career Prospect Series also going on. So these are the contributions from the alumni, various activities. Now I will be going through a couple of slides about your achievements, which is, it's a long list, but some of the important one I'll be just touch base because with the interest of time. So co-founder Khadim Bhatti from the WhatFix received $90 million in the Series D funding. And Dr. Sunil Kumar Vapula received ACM Distinguished Speaker. Also, he received IIT Biman Bihari Sen Memorial Award 2021. And Dipanjan Sarkar was selected one of the top 10 data scientists of 2020. And also under 40 data scientist awards later on. Naveen Godar is managing director now. So India and Atotech Groups, he's in now Gurgaon. So he's visited the campus a few months back. And also the Fasal Bangalore-based, this is agri-tech intelligence startup funded by Mr. Anand Verma, as an alumnus, has received recently $4 million and Mr. Naveen Matthews, also MS Digital Society, selected for the G3 ICT scholarship funds. And also Naveen also being selected for the award of Cycle 2 of the scholarship following the global and application. And most interestingly, he recently attended the blind lawn tennis. And most likely, you will hear an event may happen in India, that blind lawn tennis event in IIIT Bangalore campus. And Mr. Trisha Mittal, who is alumnus, he has also received multiple fellowships, like Adobe Research Fellowship in Maryland College Park. And also number 3 AIML Data Science Platform Company, co-founder Mr. Tarun Gulani, an alumnus of IIIT Bangalore, was acquired by the Nigon Softwares. And user ready, Mr. Uday Hegde, who's received the growth capital of Boston-based Every Partners, and also the F in Tech, multiple raised of 3 million in the funding, and also the Paddy Raghavan also started his new company, also received funded. And Alam Vidya Y was honored with the Sarvashreshtha Divyangana National Award from the Honorable President of India, Dr. Srimati Draupadi Murmu, in December 3rd, 2022, and many more achievements by alum. Let us give you all a big hand of applause for your all achievements. And we are proud of you, and we are looking forward to that, and that you can continue that, and IIITB's, all of us, good wishes, and all those things are there with you always. So next, I'll the IIITB Bangalore's little bit of update, because alums have been visiting us after some time. So IIITB has been growing in multiple directions, and we have two major things that you know: teaching and research. So we are gearing up in experienceable teaching and also translatable research nowadays a lot. So this is the our, as you know, we have received the A+ accreditation from NAC. Next is in India Today ranking, we got ranked 1 in the category of technical private university for according to India Today. Thank you, thank you. All together. Growing strength of the students. When we started, we were 300 students when ITPL, then also up to till 2012,
we are 302 went to 350 by MS PhD. Suddenly after 2012, because of IIM Tech and addition and the increase of the seat strength, now 1200 plus. So we have increased by in this fourfold. So 1200 plus students now, and we have received many hackathons awards over the years. So our students have been doing so well. And India and also in the abroad, people are going abroad and attending hackathon and winning prizes. And next. And also IIITB is rated as a green campus, and you'll be really happy to know 40%, close to 40% of our electricity is from the solar now. The rooftop of this hall is completely solar covered now, and also the others. And chairman inaugurated the 500 kVA rooftop solar power systems, and Mr. Krish Gopalakrishnan inaugurated that, so it is work functioning. And research publications and patent status has been increasing year to year. And our journal publications is constantly increasing. So because journal publications is a more weightage than the conferences people say, but computer science conferences also very good weightage and all. So that is also going on. And also one thing you have to keep it in mind, we are only 47 faculty members, where the other top, in comparison to that, we are in a good ratio, full-time faculties. And or altogether 55 number of faculties. And also in patent, you can see there is a growth of going on to the 12 and sudden growth, and we are putting a lot of pressures on the in the patent side, because this is bringing us a lot of other kind of things in long run. So we are setting up an IPR center inside the IIIT Bangalore. One person will be given the complete responsibility to filing IPR from sitting inside the IIITB. Go next. And recent labs and center of excellence, which hasn't happened in the last 1.5 years, is inside here. And you will be, Center for Technology, CITRI stands for Center for Technology Research and Innovation for Digital Governance. It has started in 2022. And this Center of Governance is mainly going to work, the research and development and proof of concepts in the area of software architecture, software engineering standards, advanced computer networking and application modernization using this, and this has been received in 3 years tranche of 9.8 crores of funding. Next. And this is another thing just started last week. So this is a Center for Excellence on Digital Public Infrastructures called DPI. Digital public infrastructures is mainly the government to the person technologies for the world, and it is sponsored by Mr. Nandan Nilekani, and it will be also being by a couple of other foundations will be sponsoring it. It was inaugurated on 15th of March by Mr. Krish Gopalakrishnan, the chairman of IIITB board, and you will be really happy to see 120 delegates from 25 countries was here, just on that, where you took the coffee today and the samosas. They were sitting there for 4 days workshops, and there was a beautiful discussions happened on G2P. And we are now truly international because of continuous international delegates coming and going out on this and working with us for these projects. And this project will take us to the global level, because this will develop all kind of applications for the world, like UPI, you know how it is good, and all kind of CoWIN, you know a lot of applications like your DigiLockers, any applications you think of, and many new things are planned to come in. So this center will be working on that. So we have received already 24.5 crores funding for this project in this DPI Center for Excellence. And there are so many other centers have started called IIITB Comet Foundation. Comet stands for Communication Enterprise Technology Center on Advanced Communications. It is a funding of 150 crores from an NMICPS, National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems, and it is mainly working on advanced communication systems. And this project is unique by itself because we are developing some of the national mission on 5G advanced and 6G areas, which will take from indigenous research to the IPR to the product. And first time academia is now talking about products, so IIIT Bangalore is in that loop now. And you'll be really happy to know IIITB is the center. There are 7 IITs are working with us as a spoke. We are the hub and they are the spokes. And there are also 2 IIITs and other institutes are working with us in this project.
And CIET, Center for, please go back, Center for Internet of Ethical Things. You know, IoT collects so much data, but ethical decisions making and all will happen, a lot of works will happen. This is the first of its kind center which is talking about IoT and ethical things, ethical AI, ML algorithms. It's a 23 crores of funding. CODR is a data lake, which is a 10 crores of funding we have received. Telemanas is a mental health R&D of 60 crores for IIITB only. And other, Nimans is the main hub, and IIITB is the technology main support to that for across the country. And many more R&D projects has been sanctioned. So if you come, we'll talk about this. And visitors to IIITB Bangalore projects, and so many visitors have been coming from India and also in the abroad. And you must be knowing the right side top figure photographer, Mr. Gates, visited our MOSIP projects, and he appreciated a lot. You can see he's so intensely watching. 40 minutes he's went through all the steps of the projects and appreciated that. And so ultimately he said, I love MOSIP, and also he has written in the visitor's book by that great work done by IIIT Bangalore, which is a starting of taking the world to the new height for DPIs and all. And Professor Rajgopalan is here, who is the president of this DPI project, who is also a faculty at IIIT Bangalore. Going next. So ways to increase connect with the alumni community. So these are the things which me and our professors, staff, and the alumni body has been discussing, Chandra and the team on you all discussing what next, where should we go. I'll just touch base with the bullet points because it needs long discussions. Like conduct alumni chapters, like we have a big body of alumni in Bangalore, but we should have a chapter in Delhi or in Hyderabad and Pune, many places in Mumbai and all, wherever our alumni there, and also in the abroad, which is, we have 2 chapters, US and Europe. I visited last year and to the London and meet the alumni there in London who are available. So have a hobby clubs, which you can make in IIITB from your side, and you can come and meet. Batch reunions, you can meet 25 years now, going to be next year of your graduating out. So you can make your 25 years of the graduating out batches, reunions like that every year, one batch. Support with jobs, you have been doing that very well, so but we need more to the institutes to support our students for more jobs, more internships, and relocations help with India and abroad. So a lot of our alumni is moving abroad because we have been, as a professors, writing recommendation letters to many of our alumni when they ask us, because various companies, so we know. So please, among yourself, make a networks and help each other to settle down there. And also, so to increase the connect with the institute, mentoring students for placement and research, entrepreneurship and further educations, recruitment, which have support publications and conferences, CSR funding. If your company is giving CSR funding to different people, so you can recommend IIITB's name. We are receiving from around 6 companies, 5 to 6 companies CSR fund for research, all kind of activities, which has helped us a lot to give fellowship to the students and also to the research activities. And also fundraisers, help with the curriculum updates, guest lectures if you want. So the next is my last one. So, so with this note, alumni is the integral part of you are very much a part of our body. So we want you are ours. So, and we are proud of your achievements. And we feel so happy, so proud when we see you first, and when we meet you, or we talk to you, or you exchange messages, any time you touch our hearts. We are always proud of you for all the activities, and please convey our regards to your parents, grandparents, and all who have brought you here, holding your hand, left with us. Now you have graduated out, doing so well. We are so proud of you. So thank you for all your participants. So in this, I want to stop at here, and wishing you a wonderful time ahead. Thank you. Thank you so much, sir, for the inspiring words. I'm feeling so proud to be a IIITBian again today. Ladies and gentlemen, get ready to be impressed. Next up, we have Impulse, the dance club of IIIT Bangalore. Give a huge round of applause.
राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ఏ బ్రదర్ ఆపమ్మా, ఈ డిక్ చిక్ కాకుండా మన మ్యూజిక్ ఏమైనా ఉందా? పవ్వగొట్టు పవ్వగొట్టు పోటీ కూర దానంచుకు పెట్టు. బ్యాండుగొట్టు బ్యాండుగొట్టు వాడకట్టు లేసుకెట్టట్టు గుద్దితే చూసుకో అద్ద షేరు గజ్జల గుర్రం ఈ సిల్కు బారు ఇచ్చి పడేద్దాం కుచ్చి పడేద్దాం ఎవడట్టమత్తడో చూద్దాం. ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ గిరగ మరగ చేద్దాం, ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ గిరగ మరగ చేద్దాం, ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ గిరగ మరగ చేద్దాం, ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ గిరగ మరగ చేద్దాం. జాబిలమ్మ రావే రావే కమ్ముకున్న
दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी अरे यार ये आजकल का प्यार भी ना। हाँ यार, हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी। जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना आए White skin, girl, 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 heart black. Ice, ice, meet, meet, my future dark. Mama, notes இருக்குதோ அப்படியே கையில ஸ்நாக்ஸ் இருக்குதோ சரியா வாசி சூப்பர் மாமா ரெடி ரெடி 1 2 3 Wow, that was simply breathtaking. Let's give another round of applause, shall we? Yeah, of course. And next we have our own MTech 2019 alumni G. Sai Teja Reddy. So we welcome him with a big round of applause on the stage. Yo, this is not a mass song. This is mega mass song.
అంటే వేసుకుంటూ స్టెప్పు అరే ఖచ్చితంగా ఎగిరిపోద్ది ఇంటి పైన కప్పు Don't stop dancing. Ponagalu loading. Don't stop dancing. Ponagalu loading. పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దుక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు. ఏ పిల్ల అట్లా నవ్వేసి పారిపో మాకే బాబు. మీరేంట్రా నన్ను చూస్తున్నారు? ఎవడి డప్పుడు కొట్టండా అది ఏ కన్ను లాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్ల ఏ నవ్వుతోటి నన్ను పేల్చి పారిపోతే ఎల్లా ఏ కన్ను లాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్ల ఏ నవ్వుతోటి నన్ను పేల్చి పారిపోతే ఎల్లా ఏ సుందరి 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 మనసువే చేసినావే ఇస్త్రీ స్ట్రాబెరీ బ్లూబెరీ బ్లాక్బెరీ మిక్స్ చేసి లిప్పులో పెట్టినావే ఫ్రెష్ జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ పిల్ల నువ్వు లేని జీవితం నల్ల రంగు అంటుకున్న తెల్ల కాగితం ఏ పిల్ల నువ్వు లేని జీవితం ఆవకాయ పద్దలేని మందు కంట దారుణం ఏ కన్ను లాంటి కన్నులున్న జున్ను లాంటి పిల్ల ఏ నవ్వుతోటి నన్ను వేసి పారిపోతే ఎల్లా ఈ పిల్ల నువ్వు లేని జీవితం తాడు లేని బంగారాన్ని గిర్రుమంటూ తిప్పడం ఏ పిల్ల నువ్వు లేని జీవితం నూనెలోంచి వానలోకి జారిపడ్డ అప్పడం ఏ పిల్ల Oh man, that was amazing, Sai. By the way, by any chance, were you the one who taught Ram Charan and NTR to those killer steps? I'm sure the audience thinks that. I think he was. So next we have a very special address by Professor Sadagopan, our very own Dumbledore of the Institute. Good evening, Professor Das, Professor Chandrasekhar. It's good to have Professor Dinesha here, Professor Tangaraju there, Patil, Registrar, and all of you alum and your families. Amol is there, so nice, and Vivek is there. So I think it is nice to be back in this auditorium with all the alumni. One of the reasons, you see, we found that only events like this can fill up the auditorium. Okay, so we needed you. And then Hemu and Roshni kept asking me, sir, you should speak. I said, you are going to have such glitzy evening, so I would be odd man out. But they insisted. So I'm actually going to speak for only 9 minutes, but I want you for some specific reason, okay? So it's interesting. I was just counting. So I've done my 44 years of academic life, 22 years at IIITB, and another 22 years at IIT Kanpur, IIT Madras, and IIMB. So the last 4 years, something interesting happened. In 2020,
one of our IIT Kanpur alum, Dr. K.M. Abraham, became the chief secretary of the state. He was the boss of the state. And he kind of called me up and said, "Sir, I need your blessings." So I was quite touched, right? Something happened 2021. The defense secretary of this country, Ajay Kumar, he became the defense secretary of the country. And he kept talking about our old days at IIT Kanpur. I do see Atul and Smriti from Kanpur here. It's nice to see. Okay, Kanpurias. Okay, I am a Kanpuria, right? And of course, last year was still more interesting. Ashwini Kumar Vaishnav, my own MTech student, became the Minister for IT and Railways. And then, of course, he called me and said, "Sir, aapka ashirwad chahiye," blah, blah. And this year, just a couple of weeks back, something more interesting happened. Kriti, who was my MTech student, became the CEO of TCS. Okay? And more interesting, and then, some people who knew that Kriti was my student, they said, "Look, did he contact you?" I said, "Yes." And he actually sent me a message seeking your blessings. "I'll call you tomorrow, I'm busy today." And he called me. So he need not have, right? And so I think there is something special about alumni connecting to alma mater. Of course, all these things I took from IIT Kanpur because IIT Kanpur has 60 years history and IIITB has only 24 years, 25 years, right? So by the time you turn 60, there will be some stories, okay? And such stories will be there. But even within a short time, you do have some interesting stories. Professor Das mentioned about Khadim, Whatfix. So Whatfix will soon be a unicorn, genuine unicorn, not what is called amplified unicorn, genuine unicorn. And then, of course, UseReady is doing well. So some of you probably should notice, UseReady participated in what is called Gartner event. Okay, so Gartner is considered the ultimate, in IT. So Gartner event, just last week. So it was kind of nice. And IIIT students are also doing in unusual places. There is something called Plug-O. Go and find out. So this is in the interesting space of battery packs and stuff like that. Naval Lodha. Is Naval around? Okay, Naval said he might come. So I think it's kind of good. But I'm actually going to completely change. That is the reason why I wanted Hemachandra to be there. So you see what happened, all the academic institutions do recognize their alumni, give them awards, talk about them, put them in their website, etc. They're important. But one line which I want you to carry today is this: celebrate the silent worker. Let me repeat, celebrate the silent worker. I am so glad Dinesha is here. I'll talk about one silent worker. Anshu Jain. Anshu was an alum. He has been working for IBM Research, doing extremely well. He moved to US. Now, of course, he's part of Facebook, etc. But what is something remarkable about Anshu was, for nearly 10 years, every Saturday, he was here. Every Saturday, he was here as an alum, helping the students to do their programming much better. See, programming is an art. You would have seen even a dance, etc., etc. See, what is special about art is 90% you don't make it. 95% you don't make it. 99% you don't make it. 99.9 plus you make it. So I think an ability to do something exceptionally well. Doing well is no good. Doing good is no good. You have to be great. I think that is what he did. And I can tell you this much, neither Professor Dinesha or me would have known that he was doing it. He needed Professor Dinesha for a few things. And he actually told me, if you had not told me, we wouldn't even know. Right? So how do people like that contribute so much without expecting anything, without expecting any glory? Okay? I think there are lots of such people among the alumni.
And I do want the Alumni Association president not to forget them. Okay? It is important that we kind of celebrate those silent workers, okay? Because they are, and you know, the reason why I'm telling is that being an old man around, so a lot of times I talk to varieties of people. I do talk to some of the alumni who are doing a great job. For whatever reason, one of them decided to join a steel plant. He's doing very well. Within that plant, he's one of the men to go to for any technology. He is a leader, and people respect him a lot. He's an excellent father, he's an excellent teacher, he's an excellent worker. But he does not have the glitz. He's not part of a unicorn, he can't talk of a billionaire, he does not shake hands with Bill Gates. But he's doing something proud to this country. Okay? I think we also need to ensure that their voices are heard and Alumni Association becomes a platform for them also. I think that is important. So let us not forget. Okay, so let me repeat again. Let us know how to celebrate the silent worker. They are the silent people, but they work hard. And I know people who have a small software company, which is not $1 billion, which will never become $1 billion company, which will not become a $100 million company, which is about 10 crores, 15 crores, 30 crores. But they give jobs to 50 people, 40 people. And within their forte, they are the leaders. Whatever they do their best. So how do they get it? Okay? So let me conclude, because sometimes it is good to, you know, even if you see in the Bhagavad Gita, even Lord Krishna, he will never say things directly. He said, look, this is what somebody said so and so. So that is the Indian style, right? So many of you would know we had a president by name R. Venkataraman. So he is from Chennai, so kind of many of us are close to him for many reasons. And, you know, he's a person who created what is called industrialization in southern India, more specifically Tamil Nadu. All of you associate things like TVS, ICF. His father used to be in ICF. And ICF makes Vande Bharat train. So you should know that, okay? So all that happened during his time. And then in one of the meetings with the CEOs, I also happened to be there. So a lot of people asked him, sir, what is your advice? So people thought that, you know, bahut dhyan denge, he will tell you lots of things, 101 points, 201 points, 16 points, 8 points, 9 points. He said very simply, he said, leave behind 2 good citizens. It's for every parent, right? Leave behind 2 good citizens. Remember, this country, for that matter, in fact, he did not even say citizen for India, citizens for the planet. See, nowadays everybody talks of sustainability, right? So we need to be, we are part of the globe, we are part of the planet. So I think each one takes a mission that he or she would leave behind 2 good citizens for the planet. This planet will be a better place to live. And the planet is a better place to live. I think we have every reason to thank ourselves. And that is truly the role of Alumni Association President. And that is what will make proud to IIITB from you, the alumni. Okay? And sorry for kind of taking away your thoughts from this glitzy world. I thought it is important to have the glitzy world, but it is also equally important to have a touch of reality. So remember the day, celebrate the silent worker. Thank you. Thank you. Thank you, sir. That was truly inspiring. Now, ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce our next speaker. He's the Dean of Academics, a man who's as important as a where clause in a delete query. Please welcome Professor R. Chandrasekhar with a big round of applause. Okay, so here I am once again to interrupt the glitzy evening here. I won't take too much of your time, and in fact, I join Professor Sadagopan and Professor Das in saying that definitely, you know, my heart swells with pride whenever I see our alumni all over the world, all over the country, everywhere. They are doing a wonderful job.
In fact, I'm myself quite glad that 15 years I've been here with IIITB. So I can also claim that I've seen 15 batches of you, of the alumni, graduate through this particular institution. I'm really, really proud of all of you. So I think I'm just going to continue where Dr. Das talked about and subsequently touched upon by Professor Sadugopan as well. As you would have seen, IIITB is definitely growing by leaps and bounds in terms of the number of things that we do, right? So when we talk about number of things that we do, it is just not limited to the number of students that are there in the institution. As was pointed out, now we are 4 times what we were probably 15 years ago. But in addition to that, the amount of activities are also increasing tremendously. So as we move along and considering that we are 25 years right now, probably this is the time that all of our alumni are quote unquote old enough to be able to help us out. So what we are realizing that in the process of all these increased activities that we are there, we are severely actually running short of hands. So in fact, Professor was talking about celebrating the silent worker. In fact, we want to unearth all those gems back into the system and then bring them back and put them on a pedestal. So on that note, I'm very happy to inform you, I think this is something that I had discussed with the Alumni Council as well, that we are launching Alumni Expert Program, wherein we will formally invite and seek expertise from any of you, all of you, to contribute to IIITB in any possible way, in a very formal way. So at least, which means that if I can just name some of the few things that are happening, right? Wherein your expertise, I know, is really out there. For example, you must be seeing that IIITB has been doing a lot of continuing education programs for working professionals, right? So we are looking for alumni to contribute as subject matter experts, right? In the delete clause with a where condition, okay? So that is just one example, but then obviously all of you have been doing so many things, and one thing we did realize is that there are 2 aspects to it, right? So when all of you join as to the IIITB as an integrated MTech student or an MTech student, so obviously our job is to make sure that we give you enough enough flotation device so that when you are thrown into the deep end of the pool after you graduate, you continue to float. And I'm very happy to see that all of you are not just floating but swimming away to glory. But in that same process, when we are doing the same thing for working professionals, obviously we really need to make sure that actually those who are already swimming out there, now how do you make them more effective, and which can be done only with your help. So I do expect a very, very enthusiastic response to the Alumni Expert Program. So that is something that I wanted to ask you and help us out. And the other opportunities, as Professor Das mentioned, the amount of research that's happening has grown by leaps and bounds. And I don't know if you noticed, so the emphasis is, whenever we are talking about research, is about translatable research or applied research. And who are the people who are, who's best at applying applications, right? Which is you guys. So which is another opportunity, I would like to invite for you to come back and help us out in furthering our applied research agenda. In fact, on this note, I think it's not a very alien idea, because we do have 4 of our IIITB alumni who are full-time with IIITB right here, right now. Right, so we have Divyaraj, we have Kalpana, we have Vivek Yadav. All 3 of us have come back to IIITB and helping us, actually joining hands with us in furthering the research agenda of the institution.
And of course, we do have Dr. Janaki, who has come back and become a faculty here, right? So I don't think the idea of coming back to IIITB for good is not such a bad idea. So please do think about it. If you want to do something different, something new, something exciting, this is IIITB is definitely the place to be right now. Because incredible amount of, especially in, because the reason why I'm saying this is possibly the best time, because enormous number of software development activities, innovations are happening right here. Right, as we speak, of course, you must have heard about MOSIP going places. We talked about the Center for Technology Research, which is again full of, it's all about software architecture and, how do you better, create better digital governance, right? So many things on digital public infrastructure. It's all about actually making a difference, innovation that makes a difference, and that is nothing but a great example of translatable research that can create an impact. Right? So finally, one last thing that I do wanted to say is that, this, in all these years, one thing I noticed is that in terms of the identity, right? So I have been thinking, what is it that we can, the ID card, these days we have started collecting it back when you graduate. I think some of you might still be having your old cards, but I still wanted you to carry one specific identity forever throughout your life, which is why we are launching a new domain, email domain called alumni.iiitb.ac.in. And each one of you will get a lifetime permanent email address. So that is something that we will constantly keep reaching out to you. So please keep an eye, now this is the time for you as a 25-year-old to actually look out for IIITB. All right? So on that note, I would like to thank all of you for coming here. And it's been a wonderful time talking to you. Thank you. Thank you, RC sir. Thank you for sharing your insights and expertise with us this evening. So next we have Amol. We would like to call him on this stage to speak about IIIT Bangalore's Benevolent Fund. Okay, respected professors, students, guests, and friends. I'm going to talk for a few minutes about the Benevolent Fund. Professor talked about the COVID challenges that we've had in the last few years. And we know that in many cases, many of us in our IIIT alumni or in IIITB student groups, we've had challenges. And those challenges have been met through contributions from the institutes, contributions from various places, in form of scholarships, in other places. Now, what we have tried to do is, we've tried to formalize this and formed something called a Student Benevolent Fund. Now, this is very, very important because this is something that we all as alumni can play a role in and play an important role in. We've had, obviously things like fees, etc., will go up naturally as we go along, expenses go up, etc., etc. We also need to be making sure that we attract the best talent over here. I know for sure that many students, and we can see it from the dance performances and other performances that we've seen, we have people from all parts of the country coming from different social backgrounds. And all of those backgrounds, in many cases, they may be very bright, but may not have those sufficient financial background to be able to afford our fees and things like that. So we would want to make sure that we use some parts of these benevolent funds to be able to attract some of the best talent who may wish to work, to study here in this great place, but may not have the means to do it. So that is, again, one of the very, very important points that I think we need to take care of. That's the reason one of these things is. The intake is going to go up. Obviously, as we go along, we want to make sure that, students, we talked about the fact that we started off with a very small set of batch, and then it has grown as we go along, and our alumni community has also grown as we've gone along. So what do we need from our alumni? So obviously, we need our alumni to be contributing to this benevolent fund. It is run by institute. There's a committee around it. There's a committee that looks at it. There is a
there is an alumni council member who's part of that committee as well. At this point of time, it is myself. And then we look at all the different cases and all the different requests, etc., or opportunities wherein we can make a contribution and help. So what we want from the alumni is a large heart, which I know that all of us have. So please contribute to this. There is a link that is mentioned over there. So that is the link wherein, you can go and contribute online. And we look forward to that. Professor talked about IIT Kanpur and the alumni network. In a lot of those cases, the hallmark of a great institute is how connected the alumni are and how much contribution are they making in making sure that, it is getting fed back to the institute from where they would have themselves benefited many, many years ago. So that is all that I wanted to share. If you have any questions, etc., you can write to us. But this is an appeal from the Alumni Council and the wider institute. Thank you very much. Thank you, Amol. So now, ladies and gentlemen, we have a real treat for you. Our next performance is from Parvaz, our Theatre Arts Club, a group of talented actors and actresses who have been rehearsing tirelessly to bring you a captivating story. The play is about Satyavrat Tripathi, who is now fed up of all the corruption and lies around him. One day, he decided to fight against it alone. He met several people in his path, and he always got disappointed in the end. Please give a big round of applause and welcome Parvaz onto the stage. जानता नहीं मैं कौन हूं, छोड़ दे मुझे। मैं अपना धर्म करते हो, मैं अपना धर्म पालन करते वक्त क्यों हिचकिचाहट होती है? छोड़ मुझे। ए चिंटू, बेटा इधर आ, देख क्या खबर आई है। आया माँ। अरे सुनो भाइयों, सुनो बहनों, सुनो मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस कलयुग में जहां कोई किसी का सगा नहीं और कोई किसी का ईमान धर्म नहीं, ऐसी इस फरेबी दुनिया में एक सत्यवादी है, सत्यव्रत। इस आदर्शवादी ने एक बात है ठानी, ना कोई गलत काम करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। शुरू हुई है एक लड़ाई, देखिए क्या होता है इसका अंजाम। बस बहुत हो गया। अरे तंग आ गए हो इन लोगों से मैं। अरे कब तक अपने खून पसीने की कमाई से इन हरामियों की जेबें भरता रहूंगा मैं? अरे इन्होंने अपने ईमान धर्म बेच खाए हैं क्या, जो इन्हें झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आती है? बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। अब मैं इन सबसे लड़ूंगा, खुद निपटूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया इन्हें जो ऐसी बातें कर रहे हैं? आपकी इस लड़ाई के चक्कर में कभी चिंटू के बारे में सोचा है? ये घर कैसे चलेगा, इसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा? मुझे तो आपकी लड़ाई नहीं पागलपन लग रहा है। माँ, आप मुझे मई के छोड़ आइए, बस मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। पहली पौना दादी माँ, किसी ने निपटाना पिताश्री, अब उस तुच्छ प्राणी का नाम बताइए, अभी उसका सर धड़ छलक कर दूंगा। अरे नालायक, चुप कर। बेटा, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन माँ, मैं बचपन में जब आपके पास आया करता था भैया की सारी शिकायतें लेके,
आप ही ने कहा था ना हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, फिर? अच्छा आप समझा। ताऊ जी आपसे हमेशा चिड़े क्यों रहते हैं? क्या माँ, आप क्या इनकी पागलपन में हाँ मिला रही है? कृपया कर हमारी स्थिति को समझिए और जरा इन्हें भी समझाइए। बेटा, तुम्हारी इस लड़ाई के कारण तुम समाज में मूर्ख कहलाओगे। माँ, ये मूर्ख का क्या मतलब होता है? मूर्ख मतलब तू और तेरे पिताश्री। अरे झूठा कहलाने से तो यही अच्छा है ना कि सारे समाज में पागल घोषित कर दिया जाऊं मैं। सच्चाई की लड़ाई का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में अलग दिखो। इसके स्कूल से निकाल देंगे इसे, तब इस लड़ाई का क्या फायदा? अरे तो नहीं भेजना ऐसे घटिया स्कूल में, कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं इसे घर पर पढ़ा लूंगा। अरे वाह, आज से छुट्टियां। वो क्या है ना, घर पे बैठे रहना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं जा रहा हूँ फिर बाहर खेलने। अरे रुक जा, चुपचाप स्कूल जा। बेटा, इसे घर पे पढ़ा के इसका भविष्य नहीं बिगाड़ना है हमें। और अगर तुम इसे नहीं लेके जा रहे तो मैं लेके जा रही हूँ। चल सामान पैक कर, इनकी लड़ाई में नहीं घुसना। पापा, अब किस किस से लड़ोगे? बेटा, जो भी झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा या औरों को सताएगा, उन सबसे लड़ूंगा मैं। लेकिन पापा, अगर उन्होंने आपको ठोक दिया तो? बेटा, मैं टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर लड़ूंगा जरूर। देखो, हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ झूठ जरूर छुपाएगा। पापा, मैं कोई झूठ मूठ नहीं बोलता। मम्मी की तरह आपके भट्टुए से पैसे नहीं चुराता मैं। देखा? अरे देखा सबने, झूठ कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा हारता है। बेटा, सच बोलने की कोई कीमत नहीं होती है, पर झूठ का कर्जा जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, याद रखना। अरे महात्मा गांधी जैसे महान लोग, उनकी जीवनी और हमारा इतिहास इस बात के गवाह है भाई। अरे ओ सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज, हाँ सुबह से चाय नहीं पिए ना, तो इसलिए ऐसे बातें कर रहे हैं। और घर में तो जैसे नौकरानी निकाल रखी है। बहू, देखना जरा, यहाँ थोड़ा रह गया है। और एक आप है, लपसी में डिब्बे में छिलके ना फेंक के आ सकती है, खा पी कर बस मोटी होती जा रही है। अब कितना भी खाए के छोड़ा ये ना छोरी। इससे बताओ, बड़ों से कैसे बात करते हैं? अरे आप लोग सुबह मत छुड़ाओ करो यार। तुम जाओ, तुम चाय बना के लाओ। और आप थोड़ा ठंड रखा करो। ये देखो। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये स्ट्रॉन्ग गम टूथपेस्ट कह रहे हैं इसे लगाने से मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। अरे इतने सालों से लगा रहा हूं मैं, मसूड़े काले पड़ते जा रहे हैं, पता नहीं कब दांत टूट के गिर जाएंगे। ये बेवकूफ बना रहे साले हमको, इनके ऊपर केस कर दूंगा मैं। ओफो, हटाओ ये सब। ये लो चाय पियो और मेरा दिमाग खाना बंद करो। ये चाय में चीनी कहाँ से आई? इस महीने के राशन के पैसे तो दिए नहीं थे मैंने तुमको। पड़ोसियों के यहाँ से लाई हूँ, हमेशा उनके पास ज्यादा रहता है। 4-6 नाम ज्यादा जो छपा के रखा है राशन कार्ड में, और दुकानदार ज्यादा लेता भी नहीं है, सिर्फ 5 रुपए ज्यादा लेता है। और आपके बेटे को गुड़ की चाय कहाँ ही पसंद है ना? हाँ माँ, ये गुड़ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं मेरे को। ये क्या चोरी चकारी कर रहे हो तुम लोग? अरे झूठ बोलने वाले, गलत काम करने वालों से ज्यादा बेकार होते हैं। तुमको अभी बता दे रहा हूं मैं, ये सब फालतू के कामों में तुम्हारा अगर दिमाग चला आज के बाद, तो तुमसे सारे संबंध तोड़ दूंगा मैं। अरे तोड़ दो संबंध रखने भी कहाँ सुख दे रहे हो हमें? घर की हालत देखिए, चूहे दौड़ते हैं यहाँ। तुमसे कम पढ़े लिखे लोग 100 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, बड़े आए संबंध तोड़ने वाले। एक तो लड़ाई करने चले और ऊपर से घर संभाला नहीं जाता इनसे। पर ये सब सही तरीका नहीं है, ये गलत है ये सब। अरे देश चलाने वालों का ही अगर ईमान नहीं तो हम सही रास्ते चल के क्या करें? अरे पूरा देश चलेगा इस गलत रास्ते पे, पूरी दुनिया चले, हम नहीं चलेंगे। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं इस घर को सही चलाने के लिए जो ठीक लगे वही करूंगी, और मैं इसे भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो ठीक है, आज से तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ठीक है, चल। इस जमाने में सत्यवादी बनकर रहना असंभव है। आखिरकार आदमी अपनी चलती फिरती जिंदगी को क्यों ही खराब करेगा? इसके पिताजी भी सत्यवादी थे, अब देखो। तो भाई और बहनों, घर से निकलकर सत्यव्रत सड़क पर आया। गुस्से की आग में वो ये नहीं समझ पाया कि घर के बाहर भी है झूठे और मक्कारों का साया। बीवी बच्चे साथ ना देंगे, रह जाएगा अकेला वो। बेगानी दुनिया में खाएगा रेले पे रेला वो। हरिओम
साथ कोई भी समस्या हो हमें जरूर संपर्क करे। हरिओम हरिओम। ये छोटू माल देना। अरे बाबा जी, आप प्रवचन के नाम पे क्या रास लीला रचाते सब मालूम है हमें। हाँ, अरे तू ज्यादा ज्ञान मत दे, उस खाते में डाल दियो इसको। हरिओम हरिओम बाबा बंगाली। ए छोटे, मेरे महीने की दवाई का इंतजाम हो गया है ना? अरे जी साहब जी, राम राम। क्या साहब जी, आप भी गरीब को शर्मिंदा करते हैं। आप ही की तो दया से गरीब का ठेला चल रहा है। शाबाश, ऐसे ही करता रहे, खूब बढ़ेगा धंधा तेरा। जी साहब जी, राम अगले राम। महीने फिर आता हूँ। पानी न मिलाई को तनिको दूध में हमारा दूध लाजब। अरे अरे अरे, माफ कीजिए भैया, माफ कीजिए। देख के चलो थोड़ा। पानी न मिलाई को। तुम रुको जरा, इधर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। अरे ना ना भैया, हमारे पास वक्त नहीं है, हमको जान दो। एक मिनट, वक्त क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम वही हो ना जो मेरे दूध में पानी मिलाता है, बेईमान आदमी। ए बेईमान किसे बोलता है बे? ऐसा वैसा कुछ नहीं करता मैं। अरे तुम क्या करते हो सब पता है मुझे। ए शक बिल्कुल गलत है तुम्हारा। अरे शक मुझे इस बात में है, तुम मेरे दूध में पानी मिलाते हो कि पानी में दूध मिला के बेचते हो? अबे सुबह सुबह सबके सामने मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत की क्या बात है इसमें? अरे साफ साफ कांड आ गया तुम्हारा सामने। अबे चल ना। क्या रखा है इसमें? ये अबे पानी मिलाते हो ना? अबे मेरे पीने का पानी है, बावला क्या हो रहा है? चल। ये तुम्हारे पीने वीने का पानी नहीं है, सब तुम्हारा सच सामने आ गया है, बेईमान कहीं का। बेईमान किसे बुलाता है बे? अरे बेईमान को बेईमान नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? देख जबान संभाल के बात कर। क्यों? सच सुनने में कोई तकलीफ हो रही है तुम्हें? तकलीफ तो अब तुझको। अरे भाई भाई, थोड़ा शांत हो जाओ भाई, सुबह सुबह का समय है, ग्राहक आते होंगे, शांत हो जाओ। तुम देखो, तुमको शांति अगर चाहिए तो ये बेईमान को समझा दो, ये सब मिलावट करना बंद कर दे। अरे भाई थोड़ी ठंड रखो। तेरी हरकत के बारे में पूरे मोहल्ले को बताऊंगा ना, फिर देखते हैं कौन दूध लेता है तेरे से। अबे जा जा, कोई कुछ नहीं करेगा। 2 किलोमीटर दूर तक कोई और दूध वाला नहीं है। इतना ही शौक है तो जा दिल्ली कड़कती ठंड में सुबह सुबह दूध लेने। अरे तुझ जैसे बेईमान से दूध लेने से तो यही अच्छा है ना कि मैं ठंड में 2 किलोमीटर दूर चल के दूध ले आऊं। देख, एक और बार बेईमानी का इल्जाम लगाया ना, तेरे दूध में ऐसी चीज मिलाऊंगा ना, फिर किसी चीज का इल्जाम लगाने लायक ही नहीं रहेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी भी सारी हरकत जानता हूं मैं। ये अपनी टपरी के पीछे बिना लाइसेंस के दारू बेचते हो तुम। तुम्हारी तो पुलिस से कंप्लेंट करूंगा मैं। अबे ज्यादा कर दे शिकायत। वो पुलिस वाले को भी मेरी सारी हरकतों के बारे में मालूम है। उसको भी महीने की 2 बोतल दारू दे देता हूँ ना, तो वो भी चुप हो जाता है। और अब तू भी चुप हो जा, समझा? अरे चुप क्या हो जाऊं? है तुम अपना थोड़ा सा और पैसा कमाने के लिए वो छोटे छोटे बच्चों से दारू और सिगरेट बिकवाते हो। अरे क्या उम्र है उनकी? अरे थोड़े से पैसे के लिए तुम उन बेचारों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। अबे सुन बे सच्चाई के सिपाही, गांधी पुत्र, तेरे भी हाथ पैर टूट गए तो तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। अरे भाई मैं तो कहता तुम शांत, मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरी तरह दारू पीने लग जाओ। अपनी तकलीफों के साथ साथ सारी दुनिया की तकलीफें भूल जाओगे। ये लो, पहली बोतल मेरी तरफ से एकदम मुफ्त। वापस रख, वापस रख। तूने सोच भी कैसे लिया तेरे ये गैर कानूनी धंधे का ग्राहक बनूंगा मैं? हैं? अबे अगर तू भी हमारी तरह थोड़े पैसे कमा लिया होता तो तेरी बीवी को भीखमंगों की तरह पड़ोसियों से चीनी नहीं मांगनी पड़ती, समझे? कह रहे हो तुम लोग? मेरे घर में क्या चल रहा है उससे तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अरे मेरा घर ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से चलता है, याद रखना तुम दोनों। तुम दोनों के बारे में ये मोहल्ले को बता दूंगा ना, दोनों की दुकान नहीं लगेगी यहाँ पे आज के बाद। गुप्ता जी, ओ शर्मा जी, अरे बाहर आओ भाई। अबे साला हम ऐसे को जानते, साला ये जिंदा करवा देंगे, समझे? चुप रहो तुम। क्या सोए से समय खोटी कर रहा है? तेरे पे होगा वक्त बर्बाद करने को, हमारे पास नहीं है। चल ना। अबे चल भैया, वो पान वाले भैया, थोड़ा माल दे दो, लेट हो रहा है। बेटा ये क्या कर रहे हो? सब तुम सब सही नहीं है तुम्हारे लिए। रखो उसको, वापस रख। ये अंकल अपने काम से काम रखना, इधर उधर टांग के अड़ा रहा है। तू माल दे। रुक जा। तुम बेटा समझ नहीं रहे हो तुम। ये तो हो ही चुके हैं बर्बाद, ये तुमको भी बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे माँ बाप ने इसके लिए तुम्हें इतनी छूट नहीं दी है, समझो जरा मेरी बात।
सुबह सुबह पी के आया क्या? ज्ञान क्यों चाह रहा है? एक तो वहाँ स्कूल जाके टीचर की बकवास सुननी पड़ेगी और तू यहाँ पे तू माल दे। लो बेटा लो। अबे देखा, तेरी बकवास बातों का किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो कहता हूँ बकवास बातें करना छोड़ो, वरना किसी दिन आयशा पीटोगे, बोलने लायक नहीं बचोगे ससुरा। अरे देख, ये बात कहीं भी बोली तेरे घर आके इतना मारेंगे, कुछ करने लायक नहीं रहेगा, सोच ले। अबे निकल। निराश हुए इंसान की एक ही होती है आशा, हाथ जोड़ भगवान का नाम लेना, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही रास्ते में सत्यव्रत के आई एक बाबा और उसके भक्तों की मंडली। देखिए देखिए क्या होता है जब वो सुनता है इस भगवान के पुरुष की बोली। बालिका इधर आओ, आशीर्वाद लो हमारे। अरे थोड़ी और समीप आओ, अच्छे से लो आशीर्वाद। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे बाबा, इसे छोड़िए, वो देखिए आपका नया बकरा आ गया। जाओ लेकर। बालिका, अब हम शाम को हरिओम करेंगे, जाओ। अरे ओ वत्स, किधर जा रहे हो? चलो, बाबा ने बुलाया है तुझे। आ जाओ, हमारे समीप बैठो। आओ आओ। अरे ये तुम्हारे मुख पे चिंता कैसी? तुम्हारी घर पे कोई लड़ाई है ना? सब जानते हैं हम। परंतु ये तुम्हारे मस्तक पर ये तो मंगल का साया है, साया। ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी छोड़। मेरा अपनी बीवी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, ठीक है? अरे छोड़। अरे तुम क्या कर रहे हो? एक तो इस गली के सबसे महाज्ञानी योगी बाबा हसन बंगाली ने तुम्हें इधर बुलाया है और तुझे ना कहने की इतनी हिम्मत, तुच्छ प्राणी। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये सब फालतू की चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं मैं। अरे और खासकर तुम जैसे लोगों पर, जिनसे लोगों को बेवकूफ बनाना आता है, ढोंगी हो दोनों। बस बस और मत बोल दियो, वरना बसन चन मेरे मुंह से श्राप निकल जाएगा, श्राप। अबे ओ मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? बाबा की श्राप कितनी खतरनाक है तुझे पता है? अभी तुम ही देख लो, पिछले साल ही तेरे जैसा एक अज्ञानी इधर आया था और बाबा की असीम शक्तियों का मजाक उड़ा रहा था। बस बाबा के इस मुंह से श्राप निकली और इसके कारण उसकी नौकरी उसका साला ले गया और इसकी प्रॉपर्टी उसकी साली। रही बात उसकी बीवी की, वो तो हमारे साथ आ गई। क्या तब से बकवास कर रहे जा रहे हो दोनों? कुछ नहीं होता है सब। अरे कहाँ का साला और कहाँ की साली? शांत हो जाओ, इधर आओ, बैठो हमारे साथ। असलियत में यही होता है जब मंगल का साया होता है। और तुम्हें तो देखकर लग रहा है कि मंगल के साथ साथ शनि का भी प्रकोप है, शनि का। परंतु चिंता मत करो, मात्र 100 रुपए दे दो हमें, अभी एक ऐसा मस्त सा हवन करेंगे, तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। परंतु हाँ, याद रहे, हवन में अपनी बीवी को लाना अत्यंत अनिवार्य है। हरिओम हरिओम। कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला हूं मैं तुमको, और ये मेरे परिवार से दूर रहो तुम, ढोंगी कहीं का। ढोंग? ये कहाँ का ढोंग? ये तो भगवान की लीला है, जो तुम जैसों को भी रास्ता दिखाते हैं, हम कल्याण करते हैं उनका। क्या कल्याण कर रहे हो? कोई कल्याण वल्याण नहीं कर रहे हो। ये बैठे हैं ना सारे बेवकूफ बना रहे हो उनको, बस उठो। चलो भक्तों, भजन करो। तू यही रुक।
तेरी मैं दुकान बंद करवा के रहूंगा। वो पुलिस बैठा ना, अरे तू मेरे कंप्लेंट अरे साथ चलो, आ जाओ, चलो शांत चलो, अरे चलो चल चल। अबे चल ना, जहाँ बोलते बोलना तेरे को जिसको है इधर आ, किसको बोलेगा? वो रात को मेरी दारू से घुट मारता है, ठीक है? उसका मेरा पर्सनल बिजनेस है। यहाँ सब बकवास मत करा मेरे को। निकल यहाँ से, देखे तेरी मैं दुकान बंद करा, निकल, चलना। तेरी मैं दुकान बंद करवा दूंगा। हरिओम बालकों, शाम का समय हो गया है, चलो आश्रम चले। बालिका आ जाओ, हरिओम का वक्त है। सत्यव्रत के दिमाग में ये बात बैठी नहीं जा रही कि ऐसे ढोंगियों से भरी है दुनिया सारी। इस सच्चाई की लड़ाई में न जाने सत्यव्रत को क्या क्या सुनना पड़ा, अरे क्या क्या देखना पड़ा। लेकिन अब जो उसके सामने आने वाला था, उसके लिए तो वो भी तैयार नहीं था। अरे इसे क्या हो गया बेटा? मेरा बेटा बीमार था, बहुत तेज बुखार है इसे, बुखार से शरीर तप रहा है। घर ही पे कृपा करके हमारी मदद कीजिए। अरे तो इसे अस्पताल ले जाओ, ये यहीं पर तो है। बहुत दूर से आए हैं हम, बेटा इधर ही लेके आए थे। डॉक्टर साहब ने गोली दी पर कुछ नहीं हो रहा है इसको, और कह रहा है कि इस हॉस्पिटल में एक बेड खाली भी नहीं है। अरे तो इसे किसी और अस्पताल में ले जाओ। चलने तो दूर की बात, इसे तो उठा भी नहीं रहा। इसकी हालत बहुत नाजुक है। हमारी आखिरी उम्मीद यही है कि एक बेड खाली हो जाए। इसे कैसे नहीं भर्ती होने दिया, अब देखता हूं मैं। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, लाइन में लगी है। अरे लाइन बन गई भाड़ में। वो बेचारा इतनी नाजुक हालत में है, आप बताइए वो मदद क्यों नहीं कर रहे उसकी? आप उसके कौन लगते हैं? अरे मैं उसका कोई नहीं लगता हूं। तो आपका क्या लेना देना? दूसरों के काम में टांग ना अड़ाइए, अपने काम से काम रखिए और चलते बनिए। अरे भाई मैं उसकी मदद नहीं कर सकता क्या? आप मेरे को ये बताइए, आप उसको भर्ती क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता मतलब? मुझे मेरा काम ना सिखाए। यहाँ पूरे अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है भर्ती करने के लिए। अरे आप थोड़ा समझिए मेरी बात, वो बेचारा बहुत नाजुक हालत में है, उसे यहाँ अगर जगह नहीं मिली तो उसके लिए बुर्दा घर में जगह ढूंढनी पड़ जाएगी, थोड़ा समझिए आप। अरे आपको बोला ना एक बार कि बेड नहीं है तो समझ नहीं आता क्या? कान में गरम तेल पोत दिए हो क्या? चलो निकलो यहाँ से, हम आपके जैसे घूम फिर नले नहीं है। मैं यहाँ जरूरी काम है। देखिए यहाँ अगर कोई बिस्तर खाली होता है तो पहले इसे दे दीजिएगा आप। हाँ हाँ, मैं यहाँ हर रोज दर्जनों मरीजों देखता हूँ, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। अरे आपको अपने काम से थोड़ा भी लेना देना होता ना तो पहले उस बेचारे की मदद करते आप। हाँ मंत्री साहब जी, बताइए। आपके लिए तो कुछ भी। ओह, भैया जी का पेट खराब है, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा, तो उन्हें यहाँ भेज दीजिए। हाँ हाँ, यहाँ बेड खाली है। हाँ बेड खाली हो गया, इसे उठा लो। नर्स, मंत्री साहब के बेटे का पेट खराब है, उनके लिए एक बेड तैयार करो। नहीं आप सुनिए मेरी बात, वो बेड पे मंत्री का लड़का नहीं, ये बेचारा लेटेगा। अरे आपको बोला ना एक बार, आप अपनी तशरीफ बाहर रखिए। अरे आप क्या बकवास कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके पास आया था, आपने कह दिया कोई बिस्तर खाली नहीं है। अरे मंत्री के एक कॉल से ऐसा क्या चमत्कार हो गया, यहाँ बिस्तर खाली होने लग गए?
मैं भी देखता हूँ कैसे लेटता है मंत्री का लौंडा यहाँ पर। बेटा उठ बेटा उठ, तेरे लिए बेड खाली हो गया है। अरे तू हिल क्यों नहीं रहा? अरे मंत्री साहब का बेटा आने वाला है, उनके लिए कुछ ठंडा गर्म का इंतजाम करके रखो। जी डॉक्टर साहब। तो जल्दी। भाई साहब से एक बात देख लीजिए। अभी बहुत देर हो चुकी है, माफ कीजिए, अब हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेके जाइए इन्हें। ऐसे नहीं हो सकता, अभी तो चल फिर रहा था, इतना जवान है, इसके साथ ऐसे नहीं हो सकता। भारी दर्द है पेट में। ए डॉक्टर देखना। आइए साहब। अरे रुक, तू डॉक्टर, तू तो एक दिन जेल जाएगा। अरे ये मंत्री के लौंडे के लिए तूने उस बेचारे को मरने दे दिया यहाँ पर। अरे तू कौन है? तू कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी का नेता है क्या? मैं कोई पार्टी वार्टी का नहीं हूँ, तू उस बेड पे नहीं लेटेगा। बेटे तकलीफ में, हमारे आदमी से और तकलीफ दे। सिक्योरिटी जल्दी आओ, निकालो इन्हें मेरे अस्पताल से। बदतमीजी मत करना मेरे से। बाहर चलो दोनों, बाहर चलो, बाहर चलो दोनों। मंत्री जी का लड़का फिर भी तो उसे परेशान कर रहा है। हवलदार साहब आप समझ नहीं रहे, ये बेईमान है डॉक्टर साला एक नंबर का। अरे साहब छोड़ा नहीं पुलिस ने उसको, बांध ले गई उसे थाने पर, बस क्योंकि गर्व था उसे एक गरीब की पीड़ा अपनाने पर। है आराम सभी फरमाते इन दीन दरिद्रों की लाशों पर, फिर भी आंच नहीं आती क्यों इन सब के विश्वासों पर। सत्यव्रत की रूह है कापी, ऐसे हैवानों को देखकर दिल हो रहा है उसका भारी। चल चल साहब आप समझिए मेरी बात। चल ना साहब बैठ इधर, बैठ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद कमिश्नर साहब। सलाम साहब, मैंने दिल्ली के हर एक चोर बदमाश साहब। कमिश्नर साहब, मजाक करता है मेरे से? अरे अरे माफ कीजिए जनाब, माफ कीजिए, आपको डिस्टर्ब कर दिया। जरूरी केस लाए हैं, मंत्री जी का मामला है, और क्या पता इससे आपको प्रमोशन भी मिल जाए। अच्छा, प्रमोशन बताओ। तेरे में तो बहुत हिम्मत होगी, मंत्री जी के खिलाफ जा रहे हैं। पता है ना किसकी सरकार है? देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ उस बेचारे की मदद कर रहा था, आप समझिए। दिखने में तो बहुत शरीफ लगते हो, पता नहीं इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है। जनाब दिखने में तो आप भी बड़े शरीफ लगते हैं, हरकतें तो इतनी साफ सुथरी हैं। आप समझने की कोशिश करिए, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। जो आप जैसे लोग जिनके पास पैसा है, पहुंचे हुए हैं, हर तरह से समर्थ हैं, वो कभी नहीं करेंगे। अरे गरीब की मदद करने का मौका मिलते ही साथ आप तो मुंह फेर लेते हैं। भाई आप लोग का काम है आम जनता को सुरक्षित महसूस करवाना। ये अब क्या मुझे यहाँ जबरदस्ती पकड़ के रखे हुए हैं? ओ आम जनता, तू तो मंत्री जी पे हमला करने वाला था, वो तो अच्छा वो नहीं है, वरना तू तो ने फेल देता। आप हमले का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आपको इल्जाम लगाना है तो सीधा मर्डर का इल्जाम लगा दीजिए। जरा ठीक है, तुझे माफ कर देते हैं, तेरे को भी काम है और हमें भी। तू बस थोड़ा चाय पानी का बंदोबस्त कर दे तो सब वाह। चाय पानी मतलब समझा नहीं मैं। अरे इसमें समझने का क्या है, थोड़ा गांधी जी के दर्शन हमें भी करवा दो। रिश्वत, अरे मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है। तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया है कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। ओ
साहब के हाथ में खुजली हो रही है, अगर उनके हाथ जल्दी नहीं भरे तो समझ लियो। ये देखिए, ये सबसे डरता नहीं हूं मैं। ए सुन, जो मांग रहे हैं वो चुपचाप दे दे, वरना ऐसी जगह डंडा डालूंगा ना कि टट्टी कर दे, चिक्के निकलेंगी, साले रात को चैन से सो भी नहीं पाएगा। देखिए, ये सब ये भ्रष्टाचार बंद करिए अपना, सब मैं बिल्कुल साथ नहीं देने वाला हूं आपका। ओ, तेरे को इस डंडे का नाम पता है क्या है? क्या है? भ्रष्टाचार। अब करके दिखा इसका विरोध। ससुरे के साथ थोड़ा हम भी मजे कर लें, छोड़ आएंगे नाली में साले को। ऐसे लोग हमारे रक्षक बनेंगे? अरे ये तो हमें ही बेच खाए ऐसे भक्षक है। सच्चाई का साथ देने की सत्यव्रत ने काफी है कीमत चुकाई, पर फिर भी उसके अटल मन में एक ही बात आई, दुराचारियों का करूंगा विरोध और सत्य के लिए करता रहूंगा लड़ाई। लखन गंगोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, लखन गंगोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, लखन गंगोरिया, लखन गंगोरिया। नमस्कार भाई और बहन लोग, नमस्कार। हमरे प्रिय दिल्ली वासियों, आज आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष एक ऐसी चीज मांगने आए हैं जिसमें असीम शक्तियाँ हैं। आपका वोट भाई और बहन लोग, आपके एक वोट की तो जरूरत है। आप खुद ही देखिए, हमने दिल्ली को कहां से कहां नहीं पहुंचा दिया। आज दिल्ली का हर एक गरीब चैन की नींद सो रहा है और एक कानून व्यवस्था टॉप हो गई है। और बिजली पानी की व्यवस्था देखिए, राशन पानी का इंतजाम भी तो देखिए तनी। आप देखिएगा, अगर आपने इहो साल हमको आने दिया तो कसम है हमें हमारी दिल्ली की जनता की कि दिल्ली का नक्शा बदल के रख देंगे। लखन गंगोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, लखन गंगोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा लक्ष्य है कि इस साल के खत्म होए तक में दिल्ली के हर गरीब के पास पानी होगा, अनाज होगा, 24 घंटा बिजली का सप्लाई होगा। ये हमारा वादा है दिल्ली की जनता से। लखन गंगोरिया लखन गंगोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह नेताजी वाह, भाई बहुत काम कर रहे हैं आप आजकल हैं। नमस्कार। अरे ये भाई साहब कौन है हो? जी हाँ, आप ही की दिल्ली से हैं, आम जनता जो आपके कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से परेशान हो चुका है। हमारे घर में पानी नहीं आता है पीने का साफ, राशन मिलने में तक तकलीफ हो रही है, घर की लाइटें नहीं रहती आधे समय, हमारा बच्चा छोटा सा है, उसे बेचारे को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, घर के बाहर की सारी सड़कें खुदी हुई है, गाड़ी लेके निकल नहीं सकता आदमी वहाँ पे, और घर के अपने ही घर के बाहर हम सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं क्योंकि आपकी दिल्ली की कानून व्यवस्था वो तो बजी हुई है आपके कर्मचारियों के कारण। अरे देखिए भाई साहब, हम आपकी सब परेशानी सुनेंगे, आप बैठ जाइए ना। हम लखन गंगोरिया वादा करते हैं जनता से कि सारा काम बढ़िया से होगा और जो नहीं करेगा उसे हम खुद आके सजा देंगे। लखन गंगोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, लखन गंगोरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखिए, ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। अरे आप हमें और इन सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाते आए और बेवकूफ़ ही बनाएंगे। अरे झूठे सपने दिखाते हैं आप इन लोगों को। आप ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं ना, ये बड़े बड़े बंगलों में जो रहते हैं, हमारे आम जनता की मेहनत के पैसे से आया है वो। अरे इतना खून पसीना बहाने के बाद हमें क्या मिलता है बताइए? भुखमरी, चोरी, भ्रष्टाचार। अरे देखिए जनाब, ये भाषण को काहे रोक रहे हैं? कृपया कर बैठ जाइए ना। अरे सब जानते हैं, दूसरे के पार्टी के है ना। अरे जनाब, इंसानियत रखिए, इंसानियत। कृपया बैठ जाइए। ए जी, तनी बोलो ना इनको बैठने के लिए। अरे आप, मैं कोई दूसरी पार्टी वार्टी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके भ्रष्टाचार से परेशान हो चुका हूँ और आपकी पोल खोलने आया हूँ सबके सामने। अच्छा, अरे अरे अरे, ये तो खासम खास व्यक्ति है हो। ए जी, इनको लेके जाओ, कह दो इनको
कि अब तो हम स्वयं इनकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इनको ऑफिस लेके जाओ, चाय पानी की व्यवस्था करो, तनी इनकी खातिरदारी करो, खासम खास मेहमान है ही। तो भाई और बहन लोग, इनके ही जैसे दिल्ली के हर एक नागरिक के समस्याओं का समाधान होगा। आप भरोसा तो करके देखिए, ये नेता वादा तोड़े वाला में से नहीं है। हम वादा करते हैं अपनी जनता को कि दिल्ली का नक्शा बदल के दिखाएंगे। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? लखन गंगोरिया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? लखन गंगोरिया जैसा हो। इस देश की है बीमारी ये भूखे भ्रष्टाचारी, जिस थाली में खाना खाते ये उसी में छेद करते हैं। लात गरीब के पेट पे मार ये अपना घर भरते हैं। इस देश की है बीमारी ये दानव अत्याचारी, खून चूस जनता का ये अपना राज चलाए। जो खाली रह जाए इनका पेट नरभक्षी भी बन जाए। अरे हद होती है भाई, ये नेता वगैरह हमारे लिए तो हैं, काम करना चाहिए इन्हें सारा। आज इनसे मैं अपनी सारी शिकायत कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। इधर देखिए मुझे मंत्री जी से मिलना है, उनसे कुछ शिकायतें हैं मेरी। अरे तुम्हारी सारी शिकायतें सुनी जाएगी, तुम ऑफिस रूम तो चलो। अरे चलो चलो। माफी सरकार, माफी माफी सरकार। भाव मैं तो बोलता हूँ इस कीड़े को इधर ही निपटा देते हैं, ना लेने का ना देने का। एक तो इसने वो साला वो हवाला वाला कांड अलग किया हुआ है, वो इंस्पेक्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, कब तक माल लाने को कहा? 30 तारीख। और आज क्या तारीख? 1। तो 2 दिन क्या मैं हवा फूकूं? माफी सरकार, माफी माफी। भाऊ ये वही है मंत्री जी वाला। अरे ये तो खासम खास मेहमान। बिठाओ भाई ने, बैठो भाई। आइए। अरे भाई मजाक मत करो, बैठाओ बैठाओ, बैठो भाई बैठो बैठो। देखिए मुझे मंत्री जी से मिलने जाना है, कुछ शिकायतें करनी मुझे उनसे। अरे थोड़ी हमसे भी बात कर लो, हम भी तुम्हारी शिकायतें सुनने बैठे हैं। बोलो क्या दिक्कत? अब देखिए मेरे घर में पानी नहीं आता है पीने के साफ, बिजली नहीं रहती है, मेरे घर में बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। मेरा घर के सामने की सारी सड़कें खुदी हुई हैं, गाड़ी लेके निकल नहीं सकते, चल तक नहीं सकते वहाँ पर। क्या क्या करूँ फिर मैं? अरे इतनी छोटी सी बात, इसमें दिक्कत क्या है? वो यमुना है ना, मस्त डुबकी लगाने का, पानी लेने का, ना लेने का। ना लेने और रही बात बिजली की, तो क्या बोलते, ड्यूरासेल लगा देने का। और रही बात फुटपाथ पे चलने की, तो सड़क पे चल लेने का। और बोलो है आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे मेरी दिक्कत। अरे भाई बोलो तो सही, तुम्हारी दिक्कतें ही तो सुनने बैठे हैं। वो कहते हैं ना, सबका साथ अपना विकास। अरे भैया आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, इतनी देर से कह रहा हूं मैं। देखिए मुझे मंत्री जी के पास जाने दीजिए, मैं उनसे शिकायत कर लूंगा। आप पकड़ के नहीं रख सकते मुझे यहाँ पर, जाने दीजिए आप। और नहीं जाने दिया तो अरे भाग गया। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ भाई, बचाओ कोई तो बचाओ। माइक लाके दूं, स्पीकर लाके दूं, साला जमीन के इतना नीचे शैतान को तेरी आवाज नहीं आएगी। आप लोग चाहते क्या है फिर मुझसे? ये हुई ना पते की बात। ऊपर मंत्री जी का भाषण चल रहा है, उन्हें कहे कि तेरी सारी समस्या दूर हो गई। फिर उसके बाद घर पे जा, माँ की हाथ का खाना खा, उनकी गोद में चुपचाप सो जा, समझा? चल निकल। तुम्हें सोच भी कैसे लिया है, घटिया काम करूंगा मैं तेरे लिए, हैं? हाथ उठाता है साले, आज तो तुम मरेगा। मारो इसे, कुत्ते की तरह मारो साले को। भाग रहा है किधर? भाऊ आप ही मारो।
खून बहाया, इज्जत गवाई, फिर भी सत्यव्रत को इस अंधेरी दुनिया में सच्चाई की रोशनी नहीं दिख पाई। लड़ता रहा वो, एक एक करके सबने उसकी हिम्मत तोड़ी, सबने उसका मजाक उड़ाया। क्या यही है सच्चाई की लड़ाई का अंजाम? हे भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? कौन सी क्रांतिकारी की आत्मा घुस गई थी आप में कि आपको ये सब करना पड़ा? आराम से भाई लगी है वहां पर। मार खाने वाले हरकतें करने से पहले ये नहीं सोचा? कभी अपने माँ के बारे में सोचा है? कभी अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचा है कभी आपने? ये छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहेंगी। जब अपने बच्चे, अभी हमारे बच्चे को बड़ा करना है, उसे सच्चाई की राह दिखानी है, समझो थोड़ा। अरे तुम क्यों नहीं समझते? तुमने जो ये संघर्ष की लड़ाई शुरू की है ना अपने पिताजी के साथ, ये सब व्यर्थ है, इसका कोई फायदा नहीं है। देखो, संघर्ष का अंत भले मेरी किस्मत में ना लिखा होगा, पर किसी की किस्मत में जरूर लिखा होगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे 11 के बाद क्या आता है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। सीधे चलते हैं 20 साल बाद वर्तमान में। ए चिंटू, बेटा इधर आ, देख क्या खबर आई है। आया माँ। नेता लखन घंगोरिया और उनके सुपुत्र की दुर्घटना में हुई मौत। मैंने बोला था ना, मेरे पति की लड़ाई सफल हो गई। देर आए पर दुरुस्त आए। ये माँ, आपने बहुत अच्छी खबर दे दी, मेरा दिन बन गया। चलो माँ, चलता हूँ। हाँ, अरे पैसे वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे। ये नेता और उनके लौंडे पे बहुत बढ़िया काम करे हो। हाँ, अब अगला इंस्पेक्टर को पकड़ो। ठीक है। हजरात, 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 मैं बदला ऐसा लूंगा कि रंगमंच दहल उठेगा। आज एक अच्छा आदमी ऐसा आतंक फैलाएगा कि दानव भी जाग उठेगा। Wow, what a performance by our Theatre Arts Club. They have truly brought Satyavrat Tripathi's story to life and left us with a powerful message. What else do you do apart from bashing up semicolons and screaming, "Can you see my screen?" I think it would be better if I could show that to all of you. Okay, while the music club is setting up things, I thought we can have a small entertainment session. So, how many of you know of beatboxing? I can't hear you guys. Come on, speak up. Okay, how would you like to learn beatboxing?
I can't hear you guys. Should I bring back Sapan back on stage? No, he's gone. PG, then we need to learn this beatboxing. Okay, so can you all say boots and cats? Okay, boots and cats and boots and cats and boots and cats and boots and cats and got that right? Now you can change cats into. Okay, so it turns out to be like. Yeah, this is a little bit advanced. So, it's just boots and cats. That's it, guys. सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद नैनों को मूंद मूंद जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते गूंज सा है कोई एक तारा 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 धीमे बोल कोई एक तारा धीमे बोल कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा बुध खो के कोई मैं कहानी पूरी कहानी है क्या किसे है पता मैं तो किसी की होके ये भी न जानी रुत है ये दो पल की रहेगी सदा किसे है पता किसे है पता सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद नैनों को मूंद मूंद बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते गूंज सा है कोई एक तारा 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 धीमे बोल कोई एक तारा धीमे बोल कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा बासी बासी पड़ी है सिरहाने बंद दरवाजा लौटी है सुबह ठंडी है मीठी सीली है दीवारें तुझे टकरा के मैं
नैना करूँ बंद बंद बह जाए बूंद बूंद बह जाए बूंद बूंद नैना करूँ बंद बंद बह जाए बूंद बूंद तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे बेमलंग तेरा एक तारा 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 जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कहते है खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए Badhani sani ga sani sa sani sare magare gane ne ga meher pani jaate jaate mujh pe kar gaya गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला तकदीर की
Make some noise. There's very few people here, but make some noise. Yeah! Yeah. Thanks. I love you too. So we're going to play two songs: "Creep" by Radiohead and "I Want It That Way" by Backstreet Boys. Let's go. When you're here before, couldn't look you in the eye, just like an angel. Your skin makes me cry, float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. It's so very special. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So very special. I wish I was special, but I'm a creep. And I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, wherever you want. So very special. I wish I was special, but I'm a creep. And I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Right. Yeah, you are my fire, the one desire. believe what I say.
Come on, guys. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Everyone. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. 'Cause I want it that way. गाड़ी नंबर 4, 7, 8, 9, 0 प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाने वाली है।
Next, we'll be performing two songs which are a fusion of metal and Indian classical music. मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना सुन मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी जिंदा रहेगी होके फना तनननदोम 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 तानदेरे ना मेरे प्यार की साथी रे मरे भी तुझको चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल साथी रे मरे भी तुझको चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल मेरी केसों के साए में मेरी रातों की खुशबू है मेरे बगैर क्या जीना मेरे रोम रोम में तू है मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है ये दूरियां हमेशा ही रहती कहाँ बुलाती है ओ पिया सानिद मग सनि धनि सगम मग सनि धनि सगम मग सनि धनि सगम धनि सनि धनि धनि सनि धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा मदनि 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 धनि सा धनि सा धनि सा मदनि 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 सा मदनि सा मदनि सा मदनि सा सनि द मदनि द सनि द सनि द मदनि सा सनि नि सा सनि नि द नि नि सा सनि नि द म म द सा सनि नि द धनि सा 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 नि द सा 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 मद सा 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 मेरे ढोल नाच मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल नाच तेरी चाहते तो फिजा में बहेगी जिंदा रहेगी होके फना
Now we'll be performing Kahe Chhed Mohe, a metal and classical fusion of it. मालती गुंधार केश प्यार गुगवारी मालती गुंधार केश प्यार गुगवारी मुख दामिनी की दामकत छल मतवारी छल मतवारी छल मतवारी धा 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 दीदी दीदी ना 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 धा 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 दीदी ना 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 धा 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 दीदी ना 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 धा 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 दादी ना दीना धा रख धा दीना धा दादी ना दीना धा रख धा दीना धा तकरान धा 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 दादी ना दादी ना धा तकरान धा 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 दादी ना दादी ना धा ढाई शाम रोक लई ढाई शाम रोक लई और जग मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 काहे छेड़ छेड़ मोए गरबा लगाए काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा
Thank you guys. Thank you guys. everyone. That was amazing. And that actually reminded me of the time when I was back in the music club and we just started jamming, and I'm so proud of these guys. They're amazing. The way the music club has grown right now is just fantabulous. Just want to wrap up with the vote of thanks. A big thank you to everyone that have participated in this event, all the staff, the faculty, the alumni council, all the clubs work very hard to give this amazing performances. And finally, the audience. And we will have dinner, but before that, you all are requested to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे